Okay, dear students, in last class, we people have discussed your class Phycomycetes and class Ascomycetes. We are left with examples of Ascomycetes as I have written here. Number one is your Penicillium. We very well know that Penicillium is your multicellular fungus, right, which is used to obtain antibiotic called as penicillin. So, आपकी जो antibiotic है penicillin, it is obtained from fungus called as Penicillium, okay, and this Penicillium belongs to your class Ascomycetes. One more example I have plotted is your Aspergillus. We are having Claviceps neurospora. This neurospora is very much important, okay, ये example पूछा गया है नीट में. This neurospora is used in biochemical and genetic work, okay. In genetic work as well as for your biochemical purpose, we are using a fungus that is your neurospora. वापस से किस क्लास में आती है ये? In your class called as Ascomycetes. And of course, this class also have edible fungus जो आप खा सकते हो, that are called as your edible fungus. And two examples you people have to memorize, that are your morels and truffles. Okay, so this is all about your class Ascomycetes. We have discussed asexual reproduction, which occurs by means of asexual spore called as conidia. Then we have discussed sexual life cycle of Ascomycetes, right, where they are going to produce sexual spore called as ascospores. This ascospores, right, are born in asci, and asci forms the fruiting body called as ascocarp. वापस से एक बार कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं? Penicillium, Aspergillus, Claviceps, Neurospora, and edible fungus are our morels as well as your truffles. So these are your two classes. Now let's move on to your next class, that is class Basidiomycetes. पहला था Phycomycetes जो primitive fungus का class है. Then all Ascomycetes, Basidiomycetes comes under your higher fungus. Okay, इसमें जो organism है, they are more advanced in comparison to those organism, those fungus who are placed in class Phycomycetes. Now let us understand your third class, that is your Basidiomycetes. Once again, the point remains same. We are going to discuss habitat, right, structure, sexual reproduction, asexual reproduction, and example. So if you are talking about habitat, right, then this fungus grows in soil, on logs, on tree stumps, as well as this organism can also be present in living organisms, in living plant body. And of course, here they live as parasite. Parasite in the sense what? They causes harm to host and obtain nutrition from the same. इसके example आपको याद रखने हैं, rust and smut. Okay, so the example of your parasitic fungus who harms host, okay, are your rust and smut. तो ये हो गई उसकी हैबिटेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑर्गेनिजम्स आर मोर एडवांस, राइट. तो यहाँ पे जो माइसीलियम है वो कैसा है भाई? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. वेरेस इन क्लास Phycomycetes द माइसीलियम वाज कैसा था? aseptate, multinucleated condition, that is your cenocytic. यहाँ पे कैसे है? Mycelium is branched and septate. Okay, compartments are present. तो simple as that. ये हो गया structure. Next, move on to your asexual reproduction. Then asexual reproduction of course occurs by means of asexual spores, जो कि ये क्लास में होते हैं absent. Okay, so here asexual spores are absent, whereas in class Ascomycetes में asexual spore present थे. Yes, and they are your conidia. Okay, so यहाँ पे asexual reproduction मतलब asexual spores are
absent. But vegetative reproduction occurs by means of fragmentation. सबसे common one, okay? Most common mode of vegetative reproduction, that is fragmentation, is exhibited by organisms belonging to class Basidiomycetes. Simple as that. Now let's talk about sexual reproduction. If you are talking about sexual reproduction, तो हमने देखा था एस्कोमाइसिटीज में कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, राइट? एस्कोगोनियम एंड एंथीरिडियम, ये सेक्स ऑर्गन थे जो एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट थे. बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट. मतलब यहाँ पे ना तो एस्कोगोनियम होगा ना तो एंथीरिडियम होगा. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव बोलो या सोमैटिक बोलो, वन एंड द सेम. ओके, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. कैसे होता है? बाय फ्यूजन ऑफ योर हाइफे, वेजिटेटिव हाइफे, जिसको आप क्या बोलो? फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज योर प्लाज्मोगैमी. ओके, एंड ऑफ कोर्स this two hyphae comes from two different organism, or they must have different genotype, as I have written. Say for example, this is organism A and this is organism B. मान लो, what is this? Yes, mycelium is branched and septate, as you can see over here. One organism, and ये देखो second organism. If I want to draw somewhat like this, right? What happens? Say for example, this is the somatic hyphae. Okay, तो ये somatic hyphae का क्या होगा? Fusion होगा. Okay, that is called as your plasmogamy. Of course, followed by this occurs your karyogamy and meiosis, which results in formation of spores, sexual spores, which are called as basidiospores. क्लास एस्कोमाइसिटीज में कौन से स्पोर थे? एस्कोस्पोर, राइट? वैसे ही सेक्सुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर. वापस एक बार, दो ऑर्गेनिज्म के हाइफे का फ्यूजन हुआ, मतलब प्लाज्मोगैमी हुई, फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोगैमी, फॉलोड बाय मियोसिस, एक के चार. And these four spores are haploid, जिसको आप बोलो basidiospore. Simple as that. However, we are going to understand sexual life cycle bit later. Okay? तो अभी आप इतना याद रखो sexual reproduction में. And lastly comes your example. Example are very much important. Mushroom, right? I guess सभी ने खाया हुआ है पिज्जा में. Okay? That mushroom called as agaricus comes under your Basidiomycetes. Okay, so first example I have written, that is your agaricus, जो कि मशरूम है. Then this two, rust and smut, जो कि पैरासाइटिक फंगस है, उसके examples. If I am talking about smut, one such example you people have to memorize, that is your Ustiligo. That is your Ustiligo. वो क्या है? Smut fungus. And if I am talking about your rust, ओके, इसके अंदर जो एग्जांपल आएगा वो क्या है आपका? पुसीनिया. सो वंस अगेन, एगेरिकस योर मशरूम, देन इज योर यूस्टिलिगो इज योर स्मट, एंड पुसीनिया इज योर रस्ट. ओके स्टूडेंट्स, let us now understand life cycle of Basidiomycetes. Here we are going to discuss how Basidiomycetes reproduces sexually. Like I told earlier that this Basidiomycetes do not have sex organ, right? But sexual reproduction occurs by fusion of two somatic hyphae belonging to two different species, or those who are having different genotype. Genotype का मतलब होता है genetic makeup. दो organism जिसके genetic makeup कैसे हो? Different, right? वो दोनों organism में क्या होगा? Fusion होगा. So here this red color one is organism A, say for example, and this black color one is organism B. Okay, and मान लीजिए कि this portion, this and this portion are somatic hyphae or vegetative hyphae.
ये दोनों का क्या होना है, फ्यूजन, एंड फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू बी मोर स्पेसिफिक, ओके, पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको आप बड़े प्रेम से क्या बोलो, प्लाज्मोगैमी. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस रेड डॉट एंड दिस ब्लैक डॉट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वैसे ये न्यूक्लियाई है. व्हाट इज दैट डॉट, डॉट आर नथिंग बट न्यूक्लियाई, ओके, एंड वी वेरी वेल नो दैट लाइफ साइकिल ऑफ फंगस इज हैप्लॉन्टिक, राइट. मतलब ये ऑर्गेनिज्म एन, ये ऑर्गेनिज्म एन होगी प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो एक हाइफे में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियस, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज, यस, क्या बोलते हैं हम इसको, डाइकैरियोफेज. सिंस दिस फेज हैव 2 nuclei, as you can see over here, one red and one black. Now what happens, this hyphae, or I can say cell also, yes or no, yes, this hyphae undergo mitosis. ये हाइफे क्या करेगी बेटा जी, माइटोसिस. व्हाट इज माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जो यहाँ पे है वही कन्फिगुरेशन ये सारे में प्रेजेंट होगा. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, इन द सेंस दिस पर्टिकुलर हाइफे हैव 2 न्यूक्लियाई, डाइकैरियोफेज. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया. प्लाज्मोगैमी होगी of 2 somatic hyphae which results in formation, okay, which undergo a process called as mitosis, which results in formation of fruiting body, जिसको आप बोलो बेसिडियोकार्प. ओके, वैसे फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइसिटिस को क्या बोला था आपने, Ascocarp, yes or no, it can have many shapes, like it can be disc like, okay, flask like, or it can be spherical. So similarly this undergo mitosis to form fruiting body called as basidiocarp. Okay, और ये आप सभी ने देखा है, this is the structure of your mushroom. Mushroom is fruiting body. Mushroom क्या है, fruiting body. Fruiting body in the sense compactly arranged network of hyphae, network of hyphae. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, माइटोसिस हुआ, और क्या बनी आपकी फ्रूटिंग बॉडी, जिसको आप बोलो बेसिडियोकार्प. एस्कोमाइसिटिस में क्या बोला था आपने, एस्कोकार्प. सिमिलरली यहाँ पे आप क्या बोलो, बेसिडियोकार्प. नाउ हियर I have drawn the structure of your mushroom. Okay, this stalk-like region. This stalk-like region is called as your stipe. उसको क्या बोला जाता है, stipe. सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, say for example this portion, okay, this portion represents your annulus. वो क्या है आपका, annulus. ये जो stalk-like region है, इसको आप बोलो stipe. स्टाइप का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन मानिए, इसको मैंने बोला एन्यूलस. ओके, द टॉप मोस्ट पोर्शन ओवर हियर नाउ, ये सबसे ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड एज योर पाइलस. एंड मशरूम को आपने पीछे से देखा है, इट लुक्स लाइक इट हैव रोज ऑफ लाइंस, यस और नो, उसको कहा जाता है गिल. कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको. ओके, दिस इज व्हाट I mean by gill. इसको क्या कहा जाता है, gill. Okay, now from here you need to understand this thing. From here you need to understand this thing. Okay, अब भाई देखो क्या हुआ, ये मैंने आपको समझाया structure of your fruiting body. Okay, मशरूम को आप पीछे से देखो तो आपको कैसा दिखेगा, series of lines. That lines are called as your gills, and that is nothing but our hyphae. That all are nothing but our हाइफे. ओके, अब देखो क्या होता है, दिस गिल्स मतलब हाइफे ही, कैसी हाइफे, हु हैव 2 न्यूक्लियस, हु हैव 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियन ओवर हियर. सो भाई देखो यहाँ पे दिस पोर्शन, कैन यू सी दिस पोर्शन हैव 2 न्यूक्लियाई, डाइकैरियन, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट. दिस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन गिल इज called as your basidia. इसको क्या कहा जाता है, basidia. Am I clear? Now
दिस बेसिडिया हैव ऑफ कोर्स 2 न्यूक्लियस एज यू कैन सी ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे तो माइटोसिस ही हुआ है. दिस इज योर 2 न्यूक्लियस. एम आई क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर प्लाज्मोगेमी? कौन सा स्टेप आता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज योर कैरियोगैमी, जिसको क्या बोले हम? कैरियोगैमी. सो नाउ लुक व्हाट हैपेंस ओवर हियर. ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, अगेन ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. होगी कैरियोगैमी, होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके, यहां पे क्या बना बेटा जी आपका 2n. 2n का मतलब योर डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड. सो व्हाट इज इट? डिप्लॉइड zygote. Am I clear? Once again, this gill-like region have a structure called as basidia. This basidia have 2 nuclei. This nuclei fuses, karyogamy होगी, which results in formation of unicellular, of course, right? That is our diploid zygote. ये बना zygote. Followed by this immediately कौन सा स्टेप आएगा आपका? थर्ड. दैट इज कॉल्ड एज योर meiosis. दैट इज कॉल्ड एज योर meiosis. व्हाट इज meiosis? meiosis इज रिडक्शनल डिवीजन. जो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? n. n in the sense haploid. n in the sense haploid who have single set of chromosome. So वापस से एक बार, ये बना आपका zygote. Now this undergoes what? Meiosis to form 1, 2, 3 and 4. 4 nuclei. What you are going to get? 4 nuclei as you can see. अब भाई देखो, ये जो रेड पोर्शन है बेटा जी, वो क्या है आपका? बेसिडिया. As you can see over here, this is your बेसिडिया. एंड इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? 1, 2, 3 and 4. Haploid spores are formed, or rather spores, what you should say over here? Nuclei are formed. Simple as that. ये nucleus है, ठीक है? Now what happens? Okay, as you can see over here, at the bottom of basidia I have drawn something, right? This portion, as you can see over here, this are nothing but your vacuole. ये क्या है? vacuole है. As the process proceeds, right? क्या होता चला जा रहा है? As you can see, the size of vacuole increases. Yes or no? Vacuole मतलब क्या? Empty space. Vacuole का मतलब क्या होता है? Empty space. Okay? So once again, यहाँ पे आपके haploid nuclei तैयार है. Now this basidia form projections. Can you see this? These projections are called as your strigma. इसको क्या बोला जाता है? Strigma. अब क्या होता चला जाएगा? The new vacuole increases in size. Yes or no? As it increases in size, ये nuclei, this nuclei are pushed. ये जो nucleus है, this nucleus are pushed inside. This nucleus are pushed inside your strigma. As you can see over here, यहाँ से vacuole की size बड़ी हो रही है, तो क्या होगा? This nuclei enters your strigma. As you can see over here, it enters your strigma as the size of vacuole increases. At the end, what you will get here are our spores which are present at the tip of strigma, ready to disperse. ठीक है? तो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई है. Now what happens? You will get 1, 2, 3 and 4. क्या मिला आपको? 4 basidiospores are formed, which are ready for dispersal. One dispersed, upon getting favorable condition, they germinates to form new organism. तो ये सिंपल सी लाइफ साइकिल होती है बेसिडियोमाइसीटीज की. अब आपने कुछ नोटिस यहाँ पे किया होगा, एस्कोमाइसीटीज में जो एस्कोस्पोर्स थे वो एस्काई के अंदर बने थे. यस और नो? एंडोजीनियसली in ascomycetes, whereas in basidiomycetes, as you can see, where the spores
स्पोर्स आर प्रेजेंट कहाँ पे है, अंदर या बाहर? Of course, outside. Yes or no? Outside basidia. So here you have to memorize. This is very important. The spores are formed. The spores are formed exogenously. Most important thing. Whereas in ascomycetes, क्या था? Spores are born endogenously, अंदर, एस्काई के अंदर. Whereas in this case, ऊपर बन रहे हैं, formed outside your basidia. Simple as that. Once again, ये गिल्स में क्या होता है? बेसिडिया में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट. This zygote undergo meiosis to form 4 nuclei. As the size of vacuole increases, these nuclei are pushed inside strigma at particular point. Once the size of vacuole increases to its most level, the spores are born on tip of strigma, as you can see over here, and these spores are ready for dispersal, and upon germination they are going to form new organism. Most important thing जो याद रखनी है, spores are born exogenously. Dear students, the last class that comes under your kingdom fungi, that is your class Deuteromycetes. This class contains your imperfect fungi. Okay, this class is also called as fungi imperfecti. इसको क्या बोला जाता है? Fungi imperfecti. Okay, what is the reason for the same? इसको क्यों हम imperfect fungi कहते हैं? Simple as that. This organisms, right? Sexual reproduction in this organism is not known. So जो भी फंगस का sexual reproduction पता ना हो, वो सारे उठा के कौन से क्लास में रख दिए जाते हैं? In class called as Deuteromycetes. Once sexual reproduction is known, either they move to Deuteromycetes और they move to Ascomycetes. वापस से एक बार, ये क्लास में कैसे फंगस होते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ना हो वो? अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चले, राइट, देन डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर आइदर शिफ्टेड टू Ascomycetes और योर Basidiomycetes. ठीक है, वैसे दिस ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स asexual reproduction, and asexual reproduction occurs by means of asexual spore, जिसको आप बोलो conidia. We very well know, right? We have studied the structure of conidia. Okay, so वापस एक बार, sexual reproduction not known, asexual reproduction occurs by asexual spore called as conidia. Now let's talk about structure. Then of course mycelium is branched and septate, as you can see over here, same as that of your Ascomycetes and Basidiomycetes. Let's talk about mode of nutrition. If you are talking about mode of nutrition, right, then some of the members are saprophytic or parasitic, but most of organisms are decomposer of litter. Okay, and this organism plays a very important role in nutrient cycling, or you can say it as your mineral cycling. Probably you people have heard carbon cycle, phosphorus cycle, nitrogen cycle. इसको क्या कहा जाता है? Nutrient cycling. And one such example, right, that are organisms which are placed in class Deuteromycetes plays an important role in mineral cycling. Okay, and lastly with example, okay, that is your Alternaria, Calectotrichum and Trichoderma. These three are the example that comes under your Deuteromycetes: Alternaria, Calectotrichum and Trichoderma. ये examples है, you have to memorize this. So by this we people have ended your kingdom fungi. General description, sexual, asexual reproduction and its 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. इसमें क्या याद रखना है आपको? This fungus are called as imperfect fungus. What is the reason for the same? क्योंकि इसका sexual reproduction नहीं पता,
अगर पता चले तो they are placed into either Ascomycetes or your Basidiomycetes. Thank you.